on online education and ICT tools. Learning for this session, Dr. Mavish has joined us as a resource person. Dr. Mavish Raza is currently working as a Dean Faculty of Education at Forman Christian College. She did her PhD in mobile learning. A number of research publications and projects are on her credit. Dr. Mavish is an experienced teacher and also an excellent trainer. Now, I would request her to please start the session. Over to you, ma'am. Thank you so much. I hope that I am audible. If at any point you lose my voice, please tell me, and Sure. by of course commenting in the chat option, and also the representatives of Punjab Higher Education Commission can simply unmute their mics and tell me as soon as you lose me. So thank you so much for a generous introduction, Sadia, and for informing the participants that today the topic of this conversation and this training session is rooted in online education, its scope, preparedness, and challenges. I am Mavish Raza, working as the Dean of Faculty of Education at Forman Christian College, University, Lahore. During this 90-minute session, I would try to give you as much information on preparing yourselves to teach in the online modality and to also to realize some challenges and to prepare for success. So that's the main objective. Let me take you through the agenda. We will talk about basics of instruction in online modality. How should you teach? What should you do as faculty members? How should you prepare yourselves? What are some of the strategies for you to keep in mind when you're planning your lectures, when you're teaching online? How is it different from the traditional modality? We will also talk about some challenges and lastly, consider some possible solutions, some steps to ensure success. So this is how this training session is going to develop from this point forward. So सबसे पहले let's talk about what is online teaching. इसकी characteristics क्या हैं? How is it different from the traditional face-to-face teaching? So approaches of online teaching and learning are that sometimes teachers can prepare a course that is to be accomplished by the students on their own. अब आप साथ साथ इसका कंपैरिजन करते जाएं फ्रॉम with the traditional setting of teaching and learning. आप सबको experience है of teaching in brick and mortar classrooms, the traditional setting where teacher is also present in the same room as students are and the instruction is live. इसके अलावा आप सबके पास experience है 1 साल से online off and on पढ़ाने का. So you understand that online modality means that the teacher and students are not necessarily at the same time online on the same platform. There is a possibility to do that as well. I mean, similar to this call, but sometimes it's the other way around. Now, when it's the other way around, या जब आप इस तरह एक ही प्लेटफॉर्म पे सब ऑनलाइन होते हैं तो 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के. एक तरीका तो ये है कि आपको एक काम असाइन कर दिया जाए एज स्टूडेंट्स और आपका इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर दे कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव एंड दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ये एक्टिविटीज़ हैं, ये रिसोर्सेज हैं, काइंडली अकम्प्लिश द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन योर ओन. Such kind of teaching approach is called as self-paced teaching, self-paced learning for the students, of course. दूसरी कैटेगरी ये है कि एक इंस्ट्रक्टर स्टेप बाय स्टेप स्कैफोल्ड करे कोर्स कंटेंट को, यानी कि takes you through different contents of the same course, him or herself, by leading the classroom. Such kind of instruction, the approach to such kind of teaching is called as instructor-led learning. Now, as we have already talked about it, that in the online teaching and learning, the learning content will definitely change.
क्यों? क्योंकि जब आप फेस टू फेस लर्निंग मोडालिटी में होते हैं या टीचिंग मोडालिटी में होते हैं तो आपके पास एसेंशली कोई नोट्स होते हैं या टेक्स्ट बुक्स होती हैं या रेफरेंस मटेरियल होता है विच यू prefer to take to the classrooms, take to the lecture halls with you and share it with the students. But now that you're teaching in the online modality, naturally you have to consult some reference material, be it the textbooks or online material. Now, when we talk about online material, there are 4 categories of online learning content. एक कैटेगरी है जो कि सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ पीडीएफ फाइल, यू हैव अ रीडिंग मटेरियल, यू हैव टेकन अ जर्नल आर्टिकल, दैट्स अ static reading material. You just give it, forward it to the students and ask them to read it. Maybe you pair it up with an assignment or you pair it up with the reflective task. या आपके टीचिंग स्टाइल पे या आपकी जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. मगर जो सिंपल लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम स्टैटिक रिसोर्सेज भी कहते हैं, एक तो कैटेगरी वो है. दूसरे रिसोर्सेज होते हैं इंटरैक्टिव. फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई गेम है या आपने अगर यूज़ किया हो कोई ऑनलाइन क्विज कभी, such as Kahoot, which is an online learning application, and similar applications are available जिनके साथ students interact करते हैं. आप options होती हैं, students उसके साथ interact करते हैं. There is some command that is given by the students, and the program further opens up new avenues for the students. Such kind of resources are called as interactive resources. Lessons can also be interactive. There are some videos available online. If you want to take help from already, the open educational resources which are already available online, maybe those kind of resources can also make up for interactive lessons. Thirdly, there are electronic simulations such as video resources जिनके अंदर वीडियो और एनिमेशंस भी आ जाती हैं. ऐसे रिसोर्सेज होते हैं. लास्टली देयर आर जॉब एड्स. जॉब एड्स क्या होती हैं? जो कि आपको ट्यूटोरियल्स होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ एक यूज़र मैनुअल आता है. वो जो यूज़र मैनुअल होता है वो जॉब एड है. सो ये 4 तरह के ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है. डिजिटाइज्ड, essentially all of this is digitized. Of course, when we say कि ये online learning content है, इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी embedded है ना. एक और चीज़ है जो कि हम पढ़ाते वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि एक एलिमेंट है, दैट इज़ द रिलेशनशिप दैट यू शेयर विद द स्टूडेंट्स. जब आप ट्रेडिशनल सेटिंग में पढ़ाते हैं और आप क्लास में एंटर होते हैं, तो फ्रॉम द मोमेंट यू स्टेप इनटू द क्लासरूम until you finish your lecture and you leave the classroom, you have a certain relationship with the students. ये relationship spontaneous relationship है. आप many of the times you don't walk into the classroom with a plan in your hand कि आज मैंने अपनी गुफ्तगू से मैं ये 5 चीज़ें डिस्कस करनी है. Sometimes, many of the times it's just in your mind, and sometimes it's triggered by the students. आपको नहीं पता होता जब आप किसी लेक्चर हॉल में एंटर हो रहे हैं कि आज स्टूडेंट्स ने आपसे क्या सवाल पूछना है. स्टूडेंट्स आपसे कोई सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हैं. उस जवाब में स्टूडेंट्स हो सकता है कोई और सवाल पूछें. एंड दिस इज़ हाउ योर कॉन्वर्सेशन बिल्ड्स यूजुअली इन द ट्रेडिशनल सेटिंग. मगर जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है वहाँ आपको अपना रिलेशनशिप स्टेटस बहुत माइंडफुली इस्टेब्लिश करना है. आपने देखना है कि आपके स्टूडेंट्स कितने % स्टूडेंट्स के पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस है ऐसे कि वो सब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके साथ. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं. ये जो कॉल है, आप भी टीम्स पे लॉग इन किया आपने, मैंने भी टीम्स पे लॉग इन किया. If any one of you had logged in on, let's say, Google Meet, they would have missed out on being a part of this training session, because this training session is going live
through a platform which is called as Teams, right? So there are so many different platforms for online communication. There's Zoom, there's Google Meet, and many other. So you have to decide if you want to maintain a synchronous relationship with your students. इसके लिए बहुत ज़रूरी है to understand that how many students have access to the internet and how many of them can come online at the same time that you want them to be online. दूसरी कैटेगरी है asynchronous. आपके पास 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरमिटेंट एक्सेस है इंटरनेट की, विच मीन्स कि वक्फे वक्फे से उनके पास इंटरनेट आता है. हो सकता है आपकी सुबह 8 बजे की क्लास में उनके पास वो एक्सेस ना हो इंटरनेट की, दे हैव टू गो समवेयर or they borrow the internet password or they share the internet with somebody else and their time starts a bit late in the day. There could be several different arrangements जो कि students ने अपने end पे की होती हैं. So ऐसी situation में if a large number of students do not have access to the internet, then you should prefer to have asynchronous relationship. That is, students write an email to you, or you're teaching through a blog, or you're teaching through a learning management system where you're just encouraging time lapse based communication. किसी ने आपको मैसेज किया, ज़रूरी नहीं है कि अब आपने फ़ौरन जवाब देना. There is a little time gap between the question and the time that you take to answer. So such kind of communication, when the receiver and sender of the message are not online at the same platform at the same time, this kind of communication is asynchronous communication, and this relationship status is also asynchronous. So online modality में आपका relationship status जो है उसको भी आपको develop करने के लिए एक तो contextual information चाहिए students से, और थोड़ी सी thought भी चाहिए कि क्या किस किस्म का relationship status आपके context में suitable रहेगा. Then you have इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो कि कोर कंपोनेंट हैं हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का. आपके पास जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं, दैट इज़ वन इज़ पैसिव इंस्ट्रक्शन, सच एज दिस कॉल. मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं. दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज बात बहुत ज़्यादा है करने के लिए, टाइम बहुत कम है. So this is passive instruction where the teacher, or it can also be called as a teacher-centered approach. Then you have some expositive methods where you engage students in activities, you scaffold the course in such a way that they experience it. Then there are applied instructional strategies where you necessarily engage students in some sort of application of skills, knowledge, or changed behavior that had been your focus to inculcate before the lecture. And then lastly, there are collaborative methods that involve students and that makes students an equal partner in their learning, and there is some sort of autonomy that lies on the students end as well. सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको पढ़ाना. Collaborative methods में sometimes it's a project based learning approach, sometimes it's inquiry based learning approach, research based learning approach. So there are many different approaches जो कि आप follow कर सकते हैं while integrating the overarching approaches of self-paced learning and instructor-led learning. Lastly, आपका जो planning और assessment है, lesson plan और assessment की planning, that is also a very serious domain when we talk about online teaching modality. जब हम naturally हम सब लोगों के पास बहुत experience है, higher education institution में आप पढ़ा रहे हैं, essentially आपकी education must be over 16 years. So you are the master of your subject. You know what you're teaching. You don't have to write a lesson plan when you're teaching in the traditional setting. I have not come across any university or college where they write down proper full lesson plans
to before their lecture. However, when we are teaching in the online modality, we have to be a little mindful of what we are teaching. We can't go unprepared in the lecture room because it can always not be a teacher-centered lecture. It will become too boring in the online modality. Sometimes you have to pair it up with student-based activities. Also, you have to keep in mind कि आप जो उनको पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, आपने असेस कैसे करना है, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं इसकी असेसमेंट क्या है. कीपिंग इन माइंड द असेसमेंट, यू प्लान योर teaching methodologies and adopt certain strategies which are suitable to accomplish those learning objectives. जब आप असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट हमारे यहाँ थोड़ा सा चैलेंज है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मोस्ट ऑफ द low income countries where there is compromised digital infrastructure. So we don't have that kind of a sophisticated software that can enable us to perform proctored examination, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स डिस्टेंस पे बैठ के इम्तहान ले रहे हैं और टीचर कंट्रोल कर रहा है कि उनकी जो वेब पेजेस हैं वो कोई और वेब पेजेस ना खोल सकें, उनका कंप्यूटर फुली लॉक्ड है जब तक कि वो एग्ज़ाम ले रहे हैं. आई बॉल मूवमेंट रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स उनके कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल्ड हैं और वो एनालाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि अगर स्टूडेंट किसी और रिसोर्स से हेल्प ले रहा है तो दे आर गोइंग टू ऑफ कोर्स सेंड अ रिपोर्ट टू द इंस्ट्रक्टर. So we don't have this kind of sophisticated infrastructure accessible and available for everybody in Pakistan. Therefore, we cannot rely on proctored examination. And we have to think of alternative examination. Alternative approaches to assessment include that you engage students in assessment that promotes critical thinking. उनको रिफ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उनकी उस नॉलेज को असेस किया जाए जो उन्होंने आपके लेक्चर्स के थ्रू गेन की है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट्स दें उनको लिंक्ड विद योर लेक्चर्स. एक और सोल्यूशन भी है, दैट इज़ ओपन बुक एग्जामिनेशन. ओपन बुक एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो thought-provoking examination which involves students in not just in straightforward answering, but it involves reflection, problem solving, maybe sometimes case studies. Straightforward ना सवाल होते हैं और ना ही उनके straightforward जवाब होते हैं. So these are some approaches to assessment. Now this is an overall overview of online teaching. कि ऑनलाइन टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनका आपने ख्याल रखना है. ये सब इस वक्त जो आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एक ओवरव्यू है ऑनलाइन टीचिंग मोडालिटी का. मूविंग ऑन, हम बात करते हैं प्लानिंग की. प्लानिंग, जैसे कि हमने बात की कि प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑनलाइन टीचिंग के लिए. यू कांट टीच without a plan. आप एक दिन तो शायद you will be able to kill time 40-45 minutes. Second day it will be a very uneasy lecture because you would know that you don't know what to teach, and students would also know that the teacher is not prepared. And this is where the start of loss of engagement and loss of concentration will start. So आपने ना ही स्टूडेंट्स के अंदर लॉस ऑफ एंगेजमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन को प्रमोट करना है और ना ही आपने अपने लिए एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करना है. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ाना है और आपने कैसे अपने कोर्स को स्कैफोल्ड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑनलाइन टीचिंग में प्लानिंग उसी तरह होती है मोर और लेस जैसे कि हम जब ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं तो हमारे पास एक प्लान जहन में, हमारे दिमाग में एक प्लान मौजूद होता है. हमें एक कोर्स आउटलाइन होती है हमारे पास जिसको कि हम रेफ़र करते हैं. उस कोर्स आउटलाइन में कुछ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि हमने खुद ही इनलिस्ट की होती हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स ने XYZ कॉम्पिटेंसीज हैं जिनको मास्टर करना है.
नाउ द प्रोविजन दैट लाइज विद द टीचर, और जो एक एज है ऑनलाइन टीचिंग का वो ये है कि यू कैन cluster different similar learning outcomes to draw learning themes, because one thing and which is a proven fact, जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो आपका जो कोर्स कंटेंट है वो ज़्यादा जल्दी रैपिडली अचीव होता है, आप ज़्यादा रैपिडली उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन बेस्ड जो हम क्लास में करते हैं वो ऑनलाइन शायद उतना टाइम नहीं लेती जितना कि क्लास में ले लेती हैं। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतना हाई क्वालिटी इंटरनेट नहीं है कि वो बहुत स्पॉन्टेनियसली टीचर की के साथ कंट्रीब्यूट करें, अपनी क्लासरूम डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट करें। सो दैट टाइम इज़ सेव्ड एंड देन यू एंड अप टीचिंग मोर in the online modality. Even if you are planning different activities, through activities you accomplish complex learning objectives. It's not always straightforward learning objectives or one learning objective that you accomplish through an activity. You end up accomplishing more than one learning objectives. Of course, because of the nature of activities that you have to plan in the online modality. सो आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को कंबाइन कर लें एंड यू ड्रॉ लर्निंग थीम्स। देन यू कैन चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए लेक्चर से पहले कि आज आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है। Spontaneously you cannot find a good relevant reading material and give it to the students. It's good to have your learning resources beforehand. It's good to align your learning resources with the learning objectives and also with the assessment objectives. Assessment objectives are also very important in the context of online instruction. आपकी जो इंस्ट्रक्टर स्टॉक है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट की होनी चाहिए। इसके बाद आपने असेंशली स्टूडेंट ओरिएंटेड कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, आपकी इनिशियल कॉन्वर्सेशन 6 to 8 minutes, then followed up by a worksheet, maybe followed up by a reading task, maybe a classroom discussion, pair work. There could be many strategies जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के दौरान। बट द रूल ऑफ द थंब इज कि 6 से 8 मिनट से ज़्यादा इन वन गो आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। लास्टली, आप अपना लेसन प्लान करते हैं बाय कीपिंग इन माइंड द असेसमेंट टास्क, क्योंकि असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए ये वैलिडेशन होना कि स्टूडेंट्स को समझ आ गया है, only then you should move on to the next set of learning objectives. If you are indecisive, अभी आपको पता ही नहीं कि स्टूडेंट्स को ये समझ आया है या नहीं आया, तो आप आगे बेशक जितना मर्जी पढ़ाते जाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हर सेशन के बाद या हर सेशन के दौरान अपनी असेसमेंट प्लान करें और इस चीज़ को चेक करें कि क्या आपने आज जो पढ़ाया वो स्टूडेंट्स को समझ आ गया, और अगर नहीं आया तो इसी को रीइंफोर्स करें, और अगर आ गया है तो वेरी गुड, मूव अहेड। सो this kind of planning, which is based on assessment tasks, it's called as backward planning model. It is also called as outcome based planning, where the teacher is always thinking about what are the students going to do by the end of this session. So what is the outcome of my teaching? That kind of planning where you're keeping in mind the outcome only, that is called as backward planning model. So we can summarize that in the online teaching, there are two main elements. One is a learning outcome and the other is the assessment. The rest of the lecture that you teach is planned around these two. आपका लेसन ऑब्जेक्टिव कि आपने कराना क्या है स्टूडेंट्स को, और फिर उसको असेस कैसे करना है। ये दो बहुत कोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपकी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, लर्निंग रिसोर्सेज हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट बेस्ड, वो सब की सब इन दो चीज़ों के अराउंड प्लान होती हैं। Now let's quickly talk about the principles of planning, जो कि ऑनलाइन टीचिंग में आपको अपने जहन में रखने चाहिए।
सारे के सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ाने चाहिए, कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने चाहिए. Yes, that's correct. That you have to teach core learning objectives. वो चीज़ें जो कि आपके स्टूडेंट्स के लिए असेंशियल हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर कोर्स जो आप पढ़ा रहे हैं, उसके हाईलाइटिंग कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. टेक देम आउट. Plan them in by following the backward instructional planning model or outcome-based teaching. Now take a look at the learning objectives, and if there is room for integrating the less important learning objectives along with the more important learning objectives, please do that. As long as you can enrich your course by keeping a focus on core learning objectives, everything is good. सिर्फ इस बात को कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ना आपने उनमें से रश थ्रू करना है और ना आपने वो मिस करने हैं. वो असेंशली आपने ज़रूर पढ़ाने हैं और बहुत इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ाने हैं. अपने असेसमेंट टास्क्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करें. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करते हैं उसी तरह असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करें, असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ के बारे में बात करें और असेसमेंट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इम्पैक्ट और प्रैक्टिकलिटी, ये चार बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं असेसमेंट की. इनके बारे में ज़रूर माइंडफुल रहें कि आपकी असेसमेंट वैलिड है, क्या ये असेसमेंट रिलायबल है, क्या इस असेसमेंट का इम्पैक्ट पॉजिटिव है और क्या ये असेसमेंट प्रैक्टिकल है तमाम स्टूडेंट्स के लिए. इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी एम्बेडेड असेसमेंट ले रहे हैं तो क्या तमाम स्टूडेंट्स के पास इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं, क्या वो तमाम स्टूडेंट्स उनके पास इक्वल एंड फेयर चांसेस टू टेक पार्ट इन असेसमेंट है, और आर यू डिप्राइविंग समवन फ्रॉम even just participating in the assessment task. If that is the case, then you should have a contextual analysis of your class. How many percentage of students will not be able to participate in a particular task? If the percentage is of course very high, then it is not recommended to stick to electronic mode of assessment, because the idea is not to leave people behind. Every student has equal right to be included in the process of teaching and learning, and your role as an instructor is not to exclude anyone on purpose. अपने assessments के लिए success criteria बनाएं. जब हम क्लास में होते हैं और ट्रेडिशनल सेटिंग में असेसमेंट ले रहे होते हैं तो हमारे जो असेसमेंट करने का तरीका है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिकॉज इट इज़ proctored exam. We are there, students are also there in front of us in the same geographic location. We can monitor them, observe them, and assess them. However, when you are going ahead with alternative assessment methods, which means reflective exams or open book exams, then it is very important for you to tell students that what are your expectations, because the question is not straightforward. आप उनसे चाह क्या रहे हैं, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है आपके जहन में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेंट. एक रूबरिक बना के दें उनको कि अगर उन्होंने उनकी क्वालिटी, जो काम की क्वालिटी है, अगर वो इस नेचर की होगी तो उनका काम एवरेज कैटेगरी में फॉल करेगा. अगर वो फॉलोइंग आइटम्स को फुलफिल करते हैं तो शायद उनका काम अबव एवरेज हो, और अगर वो एक सर्टेन क्राइटेरिया फुली मीट करते हैं तो एक्सेप्शनल कैटेगरी में उनका काम फॉल करेगा. सो बट फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, and this is only possible when you're spending some time to plan your assessment. It cannot happen for a spontaneously planned assessment. Lastly,
feedback and evaluation. Please do not ignore this. When we are in the traditional setting, we tend to chunk the class according to their ability level. और हम एक होलसम फीडबैक दे देते हैं कि जिन्होंने ऐसे किया था उनको ऐसे करना चाहिए था. These are the expectations which have not been met. But now in the online modality, you can utilize this time to give personalized feedback to students. But how do you do that in case you're teaching large classes? Let's say your class, the number of students in your class exceeds 60. तो आपका तो सारा टाइम सिर्फ पर्सनलाइज्ड फीडबैक देने में गुजर जाएगा. Again, this comes back to the fact that if you have a success criteria, if you have learning rubrics ready, if you have instructions ready for different tasks, all you have to do is just to tell students that what was missing, taking in consideration the rubrics or instructions or success criteria. So it becomes very easy. It becomes a very it does not remain a very time consuming task. Also, giving feedback and evaluation is possible electronically through voice recorded notes, short voice clips where you're just talking about what went wrong, what went and what needs to be improved. So these are some strategies to go about it as per your liking. Now, after we have talked about the instructional planning, let's talk a little bit about the activities. We've already talked about it, that activities have to be student-centered, teacher-centered. Activities have to be broken perpetually during your instruction time and should be followed up by student-centered activities. But what sort of different activities may be adopted by the instructors? Again, self-directed, जिसके अंदर students are reading, watching, maybe listening to something, or interactive activities where they are talking to one another, they are exchanging ideas. They can also interact with the teachers and they can also interact with the technology. So it really depends what type of interactive activity are you talking about. The rule of the thumb remains the same, that 60% of the time should be student-driven activities, which means that if you're teaching a 45 minutes long lecture, 27 minutes, students should be engaged in doing something on their own, either self-directed or interactive. And if you're teaching 60 minutes long lectures, then about 36 minutes of your teaching time, the students should have an opportunity to engage in different activities. Again, assessment. Now I'm going to take you through some intricate details of assessment. Information from multiple and diverse sources. Please pay attention to the keywords here, which is multiple and diverse sources, which means that teachers should not rely only a single quiz. सारे साल में आप 2 क्विज लेके नहीं ये कह सकते कि स्टूडेंट्स को ये कोर्स आ गया है या नहीं आया, या ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनको समझ आ गए हैं, या वो फेल हो गए हैं, या वो पास हो गए हैं. That's a very, very unprofessional manner of assessing students. You need to understand from multiple and diverse sources कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने कराया है ये वाकई उनको समझ आ गया. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाई स्टेक असेसमेंट के बजाय लो स्टेक असेसमेंट लें. वी विल टॉक अबाउट हाई स्टेक एंड लो स्टेक जस्ट इन अ वाइल. कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं कि आपने किस तरह की असेसमेंट करनी है. क्या आपने समेटिव असेसमेंट करनी है या फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है? प्रेफरेबली आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को साथ साथ असेस करेंगे तो नेचुरली आप ऑन गोइंग असेसमेंट को प्रेफर कर रहे हैं रादर देन असेसिंग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द whole term, because then it's too late to make a remedial intervention. How should you assess?
किस तरीक़ाकार से आपने असेसमेंट करनी है, क्या आप क्विज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स आइटम्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स की तरफ जा रहे हैं, क्या तरीका है आपका असेसमेंट करने का, और असेस किस बात के ऊपर करना है आपने. What should the students do in order for you to understand that they have understood the concept? कोई एक्टिविटी, कोई आउटकम, कोई प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने क्या असेस करना है स्टूडेंट से. लास्टली, लो स्टेक असेसमेंट चाहिए या हाई स्टेक असेसमेंट चाहिए? अगेन आई वुड से असेसमेंट इन ऑनलाइन मोडालिटी शुड बी लो स्टेक. क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है. अब जब बहुत सारी असेसमेंट्स कर रहे हैं तो नेचुरली उसके जो स्टेक्स हैं वो लो होते जाएंगे असेसमेंट के. एक तो होता है असेसमेंट कि आपने एंड ऑफ द ईयर एग्जाम लेना है, 100 नंबर का पेपर है, बस अगर ये स्टूडेंट्स पास कर गए तो अगली क्लास में चले जाएंगे, फेल कर गए तो फेल हो गए. This is a high stake assessment where there is one chance and they don't have enough room to to take risk. It's either they pass or they fail, which in the online setting is not really fair, especially in the context of Pakistan. स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं है, स्टूडेंट्स के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं, दे आर ट्राइंग, दे आर स्ट्रगलिंग, एंड वी शुड हेल्प देम, वी शुड सपोर्ट देम इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर कि हम उनके स्ट्रेस लेवल में और ज़्यादा ऐड करें. जब आप लो स्टेक असेसमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोर्स 100 नंबर का एक टोटल कोर्स है जिसको आपने ब्रेक किया. अब आपने उसको लेट्स से 5 असाइनमेंट्स के में ब्रेक कर दिया. एवरी असाइनमेंट कैरीज 20 मार्क्स. अगर एक असाइनमेंट में वो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम और हर. They can still improve their performance in the next 4 assignments. So you're giving equal and fair chance to students to try and to demonstrate the improvement in their learning achievement. You're not depriving them of this chance to showcase what they have learned. So these are the essential questions, core questions जो कि हर instructor को सोचने चाहिए before you plan and before you implement an assessment task in the online modality. अब characteristics क्या हैं assessment की? That's another very important aspect जिसको हमने consider करना है. एक तो assessment आपकी promote करनी चाहिए essentially higher order thinking skills. एक तो reflective है, दूसरा प्रमोट कर रही है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या हैं? वो स्किल्स आप सबको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पता होगा. आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द ट्रैजेक्टरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय ब्लूम, एंड द cognitive skills that are on the higher end of the continuum, those are the higher order thinking skills. Now, your assessment should also promote critical thinking. It should be used as a method for learning. Assess तो आप कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स को, मगर assessment ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दे और एक तरह से उनकी लर्निंग के अंदर इजाफा भी करे. It should be ongoing, formative, and then goes without saying that it should be low stake assessment. Assessment should be contextualized according to learners' needs, relevance and level of understanding. अगर आप contextualize नहीं करेंगे assessment को और straight forward सवाल पूछेंगे तो students very conveniently will log on Google, copy the answer and present it to you. Because it's a straightforward question, so they will get a straightforward answer and forward it to you, and then you don't know if they know the concept or they don't know the concept. That is why it's very important to contextualize it in the light of your own lectures. आपने क्या पढ़ाया, आपने किन चीज़ों के ऊपर emphasize किया,
क्या असेसमेंट में आप उन्हीं चीज़ों के बारे में दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को? क्या आप अपने लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी असेसमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, रेलेवेंस है और जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इट गोज डायरेक्टली बैक टू योर ओन क्लासरूम टीचिंग। आपने जो पढ़ाया उन्होंने वही अंडरस्टैंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं अंडरस्टैंड करना, ना उससे कम तो शायद वो कर सकते हैं, बट उससे और ऑन टॉप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट बहुत कम एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो कि खुद से प्रोब करते हैं, but majority is going to just understand what you're teaching. You are the one who's setting the pace for learners needs. आपको पता है कि आपके learners की क्या needs हैं, because that's how you have trained them. So अगर आपने challenge level उनके लिए ज़्यादा set किया हुआ है, through your instruction they will be able to perform better, or the assessment should be challenging. But if you have taught them without giving enough challenge to them, then please don't try to set that challenge or increase the bar of challenge during the assessment, because that's an attempt to make sure that your students fail. और students को fail करने में there shouldn't be any pleasure, because that's not your achievement and that's not what you want to do. That's not your core objective as teachers. Lastly, collaboration को allow कर दे assessment में. क्यों? क्योंकि anyways उन्होंने collaborate करना है. आप उनको जो मर्जी कह लें students को, they are going to collaborate. They will talk to one another. They will consult online resources. So why not you make it, officially you announce it that okay, you can engage in collaboration, and give them teamed assessments where you're checking their performance in teams, and there are mechanisms to do that. You can check the individual performance as well as the collective performance. I would really encourage you to read a bit more on this concept, because this is important, and this is quite doable. Even in Pakistan this is doable. So collaborative assessments may, again, assessments become an opportunity for students to learn, because they end up learning from one another. जितना ज़्यादा आप उनको स्टूडेंट्स को पेनलाइज करेंगे और ये कहेंगे कि सॉरी आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते and that falls under cheating, you're undermining your own authority, because you have no idea how much have they collaborated. So don't give this feeling to them that you don't know. And secondly, students are going to collaborate. You cannot monitor them 24/7, and there are absolutely no way that you can find to what extent have they collaborated. So a good idea and a sane approach to overcome these challenges, to actually officially make collaborated assessments and to follow that. Now I have an activity for you. Thank you so much for listening to me so patiently. I know this was a lot of conversation, and I hope that you have been able to grasp a few ideas from what I have talked about. I'm sending you a link in meeting chat. It will take a while to appear in the meeting chat. I've already sent it. These are actually very valid responses. ऐसा ही है, ये सब बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि हमारे यहाँ ये सब प्रॉब्लम्स बहुत एक्यूट है. हम चाहे ये समझ लें कि ये जो जनरेशन है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, दे आर टेक सेवी, दे कैन बी टेक सेवी, यस, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन एंटरटेनमेंट, व्हेन यू आस्क द स्टूडेंट्स कि वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में नेविगेट करें फॉर एकेडमिक पर्पसेस, तो अचानक उनको प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और वो ट्रबल शूट नहीं कर पाते. यूजुअली, very often it happens. कुछ लोग कर भी लेते हैं, it's not a generalized statement, but होता यह है कि टाइम के कंस्ट्रेंट्स, एक वो स्ट्रेस कि अब आपने इसको इस टाइम तक ख़त्म करना है, they are not in a relaxed mindset. Then knowledge of technology is limited to only their own pleasure.
their own activity and entertainment. That's another very acute problem. और ना सिर्फ ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ है बल्कि ये प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी है. बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको के टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना नहीं आता, विच इज़ ऑल राइट बिकॉज वी हैवंट डन दैट एवर. You see, it all comes down to the kind of experiences that we have had, and I'm sure many of you must have learned a lot on your own in the past 1 year. 1 साल से हम इसके साथ इस सिचुएशन के साथ कॉम्बैट कर रहे हैं और हमने बहुत सारे मुख्तलिफ रिसोर्सेज लेके टीचिंग एंड लर्निंग को प्रैक्टिस किया है. फर्स्ट टाइम शायद फेलियर हो, दूसरी दफ़ा शायद हमारे पास कुछ और बेहतर आइडियाज़ हों, बट काफ़ी लोगों ने मास्टरी लेवल तक भी अपने आप को जाते देखा है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. सो दीज आर द सिल्वर लाइनिंग्स ऑफ कोविड. सब चीज़ें ही ख़राब नहीं हैं. कुछ चीज़ें कोविड की वजह से हमने भी सीखी हैं. अब जो इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत वैलिड प्रॉब्लम है और उसके ऊपर ना मेरा इख्तियार है और ना आपका इख्तियार है. अगर एक स्टूडेंट एक ऐसी इन्वायरमेंट में है या एक ऐसे जोग्राफिकल रीजन में है जहाँ पे इंटरनेट 4G फैसिलिटी है ही नहीं, so we can't do much. We cannot do anything, in fact, about the provision of internet, of course, but we can make sure that we still include that student in the ongoing process of teaching and learning. और हम उस स्टूडेंट की के लिए रिमोट लर्निंग पैक्स बनाएं, हम उनको इंक्लूड करें ऐसे बच्चों को. ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय ओन इंस्टीट्यूशन. Immediately, the first response by the academics department and student service department at FC College University was to perform a survey to identify कि बहुत सारे बच्चे जो कि अपने होम टाउन से आए हैं, उन होम टाउन्स के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी है या नहीं है. क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स हों, सब कुछ हो, मगर अगर उनके पास इंटरनेट ही नहीं है वहाँ पे तो क्या करें. फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉर्डरिंग एरियाज से आए हुए हैं जो कि अफगान बॉर्डर के साथ है, जहाँ पे बिल्कुल ही इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है. सो अब क्या करें. अब उनको छोड़ दें पीछे, या उनको पढ़ाएं ना, या उनको कहें कि अब आपका 1 साल ज़ाया हो गया. तो ऐसा नहीं हमने किया. वी created remote learning packs for all of such students, and we gave them, we posted those learning packs to them. और जहाँ पे एक्सटेंसिव लर्निंग रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व थी, वहाँ पे उनको पोर्टेबल डिवाइसेस में हमने वो लर्निंग रिसोर्सेज भेजे. So just to sum it up, it's very important for the institutions and for the teachers to keep in mind the core objective. आपका core objective ये नहीं है कि आपने इंटरनेट के साथ पढ़ाना है या आपने ऑनलाइन पढ़ाना है. आपका core objective है कि आपने पढ़ाना है. अब कैसे पढ़ाना है बेस्ट तरीके से, keeping everybody on the same board, that's your decision. हाँ, जी सर. मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही. sorry, I जी अब आ गई. guys, अब आ अब रही आ है रही है आवाज. आपको? अब आ रही है Okay, सर. thank you.
थैंक यू। सो कुछ पॉसिबल चैलेंजेस हैं जिनको मैंने थीमेटिकली और अरेंज किया है। ये वहीं से उन्हीं चैलेंजेस के ऊपर बेस्ड है जो आपने अभी रिपोर्ट की है, बट दीज आर जस्ट थीमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड. So very quickly, we'll just quickly consolidate the challenges by saying that some challenges are instructor related, where instructors would start to feel that they are consuming, they are spending a lot of time in planning. Feedback is very lengthy, and then टीचिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत चेरिशेबल एलिमेंट होता है एम्पावरमेंट. जब आप अपने दफ्तर से निकल के कॉरिडोर में कदम रखते हैं और स्टूडेंट्स आपको इज्जत से देख के कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, and they respect you, they admire you, they look up to you, you're going to miss that in the online setting, because in the online setting it's not that close relationship that way. I mean, because you're not in the same physical setting. So ये वाली सारी चीजें आपको लगेगा कि जैसे आपकी empowerment कम हो रही है. But having said that, in the online setting you can also have a very good relationship with your students, and it is more on a one-on-one personalized level. So you would experience that, and most of you must have experienced it, I'm sure, during the last 1 year of teaching online. Then there are assessment related problems, reliability issues हैं. एक assessment आज आपने ली, 4 बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी, आज उनके घर में लाइट ही नहीं थी, बैकअप भी उनका एक्सपायर हो गया. अब वो उन्होंने आधा असेसमेंट दिया, आधे के बाद इंटरनेट ऑफ हो गया, सो दे फेल्ड द टेस्ट. बट दैट्स नॉट अ रिलायबल स्कोर because they were not able to take the assessment fully. So reliability oriented issues होते हैं. टाइम लैप्स आ जाता है, आपने क्विज अनाउंस किया है 15 मिनट्स के लिए, वो 15 मिनट्स ही उसका कंप्यूटर जो है वो स्टक हो गया and was not able to attempt the full quiz. There can be all sorts of problems, and technology can be a big reason for your failure as well. Let me tell you, I mean, it's not always कि आपने पास ही होना है या आपने सक्सेसफुली होना है टेक्नोलॉजी के साथ. समटाइम्स टेक्नोलॉजी कैन बी अ रीजन फॉर योर फेलियर. फिर अनइन्फॉर्म्ड कोलैबोरेशन, जैसे हमने बात की, एकेडमिक डिसऑनेस्टी में फॉल करता है ये. इसके अलावा गोस्ट राइटिंग एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में. काम किसी का था, किया किसी ने, दिया किसी ने. कभी कभी तो वो एक ही काम इतने स्टूडेंट से आ जाता है कि समझ ही नहीं आती कि ये ओरिजिनली किसने किया था. उसका इंटरफेस भी एक ही होता है, फॉन्ट भी वही होती है, साइज भी वही होता है, इवन यहाँ तक के जो गलतियां वो भी सेम होती है. कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करता. ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, एंड देन दे सेंड द वर्क टुगेदर सेम डेडलाइन के ऊपर. तो इट्स हार्ड फॉर यू टू टेल कि किसने किया और किसने नहीं किया. इसके अलावा गोस्ट राइटिंग में ये भी कैटेगरी, ये भी एक आता है कि मेरे तो भाई ने कर दिया मेरा काम, या मेरे मामू ने कर दिया, मेरे चाचा ने कर दिया, सो मैंने तो किया ही नहीं. सो अब आपको तो नहीं पता, वो काम तो यूनिक है, वो आ तो स्टूडेंट के लॉगिन से रहा है, बट उसको आप यू आर ऑलवेज अनश्योर कि पता नहीं किसने किया है ये काम. सो ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. देन देयर आर मोटिवेशन रिलेटेड इश्यूज, स्टूडेंट एजेंसी रिलेटेड. बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ने में. दे आर नॉट जस्ट दे don't find it fun. There is weak communication, there is weak follow-up, and ultimately it causes them to drop out of the course. As per research, अभी पाकिस्तान की जो स्कूल पॉपुलेशन है वो तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की. ऑलमोस्ट 22 मिलियन बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते. So according to a research conducted by World Education Service, the percentage of school dropouts is likely to increase by 14 to 15% just after 1 year of COVID, which means that we are it's a it's quite a lot of students out of school, and this is not just going to happen or be curtailed only to school level, बल्कि ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसके इम्पैक्ट्स आएंगे.
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ तो सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनको लग रहा है कि ये जो पढ़ाने का तरीका है ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि फेस टू फेस पढ़ने का तरीका था। सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, मगर एनीवेज लो इंटरेस्ट, वीक कम्युनिकेशन, वीक फॉलो अप, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर फिट करके होके मोटिवेशन रिलेटेड इश्यूज को प्रोड्यूस करती हैं। देन देयर आर करिकुलम रिलेटेड चैलेंजेस। हर करिकुलम के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल उर्दू, वो हमने खुद बनाने थे रिसोर्सेज, दुनिया ने नहीं बनाने थे, वो हमने बनाए ही नहीं, कभी भी नहीं बनाए। तो अब हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उर्दू में, स्पेशली जो डिग्री हो रही है, उसके लिए तो किताबें तक मौजूद नहीं हैं, रीडिंग मटेरियल तो बहुत दूर की बात है, वीडियोस तो बहुत दूर की बात है। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर पाकिस्तान्स हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन यू हैव इंस्टीट्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस। आपके इंस्टीट्यूशन में इजाज़त ही नहीं कि आप कोई फ्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे अपना कोर्स ले जाएं, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और जो गलतियां आप करेंगे उसका एक जो इम्पैक्ट है वो तमाम आपके इंस्टीट्यूशन पे आएगा। सो पॉलिसी सेज कि यू कांट, आपने बिल्कुल किसी फ्री ब्लॉग पे या किसी फ्री रिसोर्स के ऊपर अपना कोर्स नहीं पढ़ाना। देन यू डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। शायद कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, उनके अंदर इंटरनेट नहीं कनेक्ट होता। कुड बी मैनी अदर प्रॉब्लम्स, कैमरा नहीं इंस्टॉल्ड, किसी का माइक नहीं चलता, किसी के अंदर स्पीकर्स नहीं हैं, वह साउंड कार्ड खराब हुआ है, उसको ठीक कराना। सो पेटी इश्यूज, and they result in taking a lot of energy by the faculty to address. Lastly, monitoring and evaluation. Again, I mean, it's ये students के point of view से ही मैंने अपना एक लिखा है कि ghost writing, plagiarism, ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए टीचर्स के पास कम provisions हैं, and it's again challenging for the teachers. With this, let's quickly talk about how can you prepare for success. सबसे बड़ी बात तो ये है कि you should work in teams. You should collaborate with each other, support each other. अगर एक यूनिवर्सिटी में 4 लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स, या एक डिपार्टमेंट में 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं फिजिक्स के, तो आप अपनी पूरे कोर्स आउटलाइन को, लर्निंग आउटकम्स को डिवाइड कर लें among 4 people and work in 4 different teams. Each one of you carries a load, and you come back with your colleagues, I mean with a lesson planned and learning resources aligned. So आपने बुक के 2 चैप्टर्स में को आपने कवर करना है, आपके कॉलीग ने 2 चैप्टर्स करना है, दूसरे कॉलीग ने 2 और चैप्टर्स करना है। सो हर एक का वर्कलोड ज़रा कम हो जाएगा, और क्वालिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट आउटकम्स, it is likely to improve that way. Then you must prepare remote learning packs, क्योंकि हर एक के पास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है। Please try to use formative assessment. It should be embedded within your teaching. जहाँ आपको ये realize हो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया ये concept, do it again. There is no fun moving ahead without your students understanding the whole thing. You should encourage peer collaboration because it is going to instill a certain level of interest and motivate students as well. It will arouse their interest. सिर्फ टीचर ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस के ऊपर या लेक्चर्स के ऊपर फोकस मत करें. एंड लास्टली, build on your failures. There is no harm in accepting that yes, you weren't able to perform. These were your mistakes, and next time you are going to address these mistakes in a different manner. With this, I come to an end of this session. Thank you so much for your concentration and for active listening. Now the floor is open for conversation. We'll keep it very brief. So please raise your hand. I will call out your name, and then you can voice your thoughts.